करने जा रही हूँ मेरा आईब्रोज शेप एंड अपर लिप्स निकालने जा रही हूँ। यस, आपके सामने ही, कैमरा के सामने ही। जी हाँ, जब से ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस का सभी स्टार्ट हुआ ना, जब से हम घर में हैं, पार्लर तो इट इज़ लाइक बंद। पार्लर जाने का नाम ही नहीं है। तो धीरे धीरे अपने आप बहुत कुछ सीख लिए हैं। काफ़ी लोग भी कुछ ना कुछ तो सीख लिए होंगे, ग्रूमिंग वगैरह। तो मैंने हेयर कट भी किया था, मतलब ट्रिमिंग करके आपको परसों वीडियो दिखाई थी। एंड मैंने आईब्रो करना भी सीख लिया है। जिसको इस ये चाहिए वो चाहिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाहिए बस एक धागा, कोई भी धागा ले लीजिएगा, चलता है। एंड मैं आईब्रोज करने जा रही हूँ। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है। मैंने लिया, कुछ टाइम लिया, मैंने करते करते सीखा है। बहुत टाइम लेता है सीखने में। अगर आपको उसका जो टेक्निक होता है ना, कैसा करने से क्या होता है, कहाँ साइज फिट रखने से कहाँ से निकलता है बाल, अगर वो टेक्निक आपको पता चलेगा ना, मतलब वो जब हैंड इन हैंड आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, इट इज़ लाइक नथिंग एल्स। पार्लर बिल्कुल भूल जाएंगे। मतलब आईब्रोज अपर लिप्स काटने के लिए आप पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अपने आप घर में निकाल लेंगे। राइट। तो ये लॉकडाउन होने के बाद तो बहुत कुछ फ़ायदे हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम हम नहीं सीख पाए ना, सब सीख रहे और सीख रहे भी। तो चलिए आज मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत बढ़ गया है मेरा, देख सकते हो, ये एक्स्ट्राज है। ओह माय गॉड, ओके। एंड अपर लिप्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, मैं ले रही हूँ ये एक धागा, कोई भी धागा ले लीजिएगा। ये कपड़े सीने की धागा है और इसे इतना लेंथ ले लीजिएगा जितना लेंथ वेंथ कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से ले सकते हो। ओके, मेरा हाथ जितना मैं इसे ले लूँगी, इसे कट कर दिया। और इसको मैं क्या करूँ, और इसे एक नॉट डाल देंगे इस तरह से। डन। एंड हमको इस तरह से कुछ चाहिए, पकड़ लेंगे दोनों हाथ से, इस तरह से फिंगर की हेल्प से इस तरह से पकड़ना है। जस्ट शोइंग यू, दिस इज अ शेप। इस तरह से आना चाहिए। एंड इतना आपके फेस के हिसाब से इतना एक्स्ट्रा आना चाहिए। लेंथ देख लीजिएगा। तो टेक्निक अगर आपको पता हो गया ना, देन यू आर लाइक नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसे इस तरह से पकड़ना है एंड इस हाथ से इस तरह से रोल इन कर दीजिएगा। 1 2 3, बहुत काफ़ी है। आप देख सकते हो, मैं ये बाल जो है, दिस पार्ट, दिस हैंड, लेफ्ट हैंड इज वे यू टारगेट, या लेफ्ट या राइट, एक तरफ आप टारगेट करेंगे बाल को। दैट इज यू कीप इन दिस वन साइड एंड दिस साइड यू जस्ट पुल इट ऑफ so that hair gets trapped here and it gets cut easily like this. समझ लो, समझ में आ गया ट्रिक। इस तरह से यहाँ पे बाल फंसेगा, समझ लो ये मेरा फिंगर जो है बाल है। एंड यू जस्ट कीप लाइक दिस एंड जस्ट पुल इट, इट गेट्स कट। आई विल शो यू, डोंट वरी। इस तरह से रोल इन कर लो। यार कहाँ दिख रहा है, इस तरह से मैंने टारगेट कर दिया। ये जो लेंथ है ना, जितना छोटा रखेंगे उतना आपको कंफर्ट रहेगा। मैं इसी तरह से छोटा कर लूँगी। ठीक है, ज़्यादा लंबा रहेगा ना, यू टू कट लाइक दिस। ये जो फ्रिक्शन होता है ना, जो ये जो मोमेंट होता है, वो इजी नहीं होता है। बहुत लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, मैंने इसे ऑलमोस्ट मंथ्स टुगेदर, मैंने इसे स्टार्ट करते हुए मंथ्स टुगेदर हो चुका है। मैंने पार्लर बिल्कुल भी नहीं गया है। मैंने ये जो फोरहेड का बाल जो होता है या ट्रिमिंग करना है या अपर लिप्स, मैं घर पे ही निकाल रही हूँ। इट्स लाइक आई हैव गॉट हैबिटेड टू इट, तो आई एम एबल टू डू इट माई सेल्फ। दैट इज हाउ। Okay, so I'm targeting in this way and this, and be very careful. See, that is how it gets trapped.
Saw that? पेनफुल है यार, पेनफुल है, होता है ना। So that it is very easy. दर्द तो होता है यार, अगर मैं आईने के सामने ठहर के करूँगी ना बहुत इजी होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। कैमरा का पॉइंट मतलब कैमरा का ये जो यहाँ है और मेरे को करना पड़ता है यहाँ, तो दैट इज मेकिंग मी डिफिकल्ट। जिस ट्रिक पता चलना चाहिए कहाँ ट्रैप होता है बाल, एंड जस्ट पुल इट ऑफ दिस, so that that's it. So just go on doing that, and मैं इस तरफ भी दिखा। देखिए, सो सिंपल। ओके, दिस साइड मैं आईने के सामने ठहर के करके आपको दिखाऊंगी, एंड अपर लिप्स भी दिखा दूंगी मैं कैसे निकालती हूँ। लिटिल बिट ऑफ फोरहेड ऑल्सो, फोरहेड की भी बात। जस्ट टारगेट द हेड लाइक दिस अपवर्ड्स एंड जस्ट पुल। Target, you should make this side small and this the big, so that you can just trap the hair like this, pull, trap it, pull. That's it, you're done. You're done with your forehead, right? Is it simple?
And let me tell you, be very careful with your fingers. So this happens when you do this. So you can have a plaster. I forgot to say this in the beginning itself. Apply plaster. Okay, stick a plaster over here. This finger and this finger, because it gets hurt. Because you're pulling it, right, and this is like too thick, so it might get cut. So this will happen. So have a plaster over here. Okay, I forgot to bring it, so anyhow, I'm gonna do it. I don't know if it is capturing or no. Side. This is obviously all girl face. Because seeing the camera and one by one, it is becoming very difficult. If you stand near the mirror and do it, it is really very comfortable. Trust me, you try this. Just have this and one hand twisted, 1, 2 and 3. So this is coming in between, not 1, 2, 3. That's it. Play with your face, eyebrows. This is how it works. It's a very simple technique. Just do this. Okay, I'll finish up and I'll come back. देखिए, सो इजी, सो सिंपल. हाँ, टाइम कंज्यूमिंग ज़रा होता है, ज़रा सा ना हैंड्स पे भी स्ट्रेस पड़ता है, बट या दिस इज़ योर लाइफ सेविंग हैक बोल सकते हो. रिस्क लेके बाहर जाना एंड पार्लर में पता नहीं कौन क्या, अभी भी थोड़ा सा रिस्क है ही, राइट. तो इसीलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है मेरे जैसा, घर में आराम से कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा. टेक्निक अगर मालूम पड़ गया, इट विल बी मोर सिंपलर, मोर ईजियर. जाते जाते इट विल टेक मोर टाइम, मतलब जाते जाते कम टाइम में आप कर ले सकते हो. सो सिंपल. आई एम डन विथ माई फोरहेड का भी मैंने बाल निकाल लिया है. जरा सा टैनिंग हो रखा है यहाँ. तो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे फेशियल का. तो मैं शेयर करने जा रही हूँ DIY homemade face pack to get rid of the tan, pigmentation and this dull face. So stay tuned to my channel, and yes, that is it for today, and this is the live result. There's no hairs, very simple, right?
ओके, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे बहुत सारे मैं कुछ करती रहती हूँ, लाइक प्रोडक्ट रिव्यूज़, DIYs, होम रेमेडीज, स्किन केयर रूटीन, यस, more product reviews, yes. So stay tuned to my channel, give a thumbs up for this video and share it to your friends and make them also subscribe. Okay, tada, मिलूंगी next video में with skincare routine. Stay tuned, right? Bye. Love you all.